Okay. Saurabh, you want to kick it off? Yes, सुरेश जी. जी सौरभ भाई. हाँ, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊं कि आप बताएंगे? जैसा आप शुरू करें और अगर कुछ जोड़ना होगा तो मैं जोड़ दूंगा. ऐसा करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं. So I'll start with myself. मैं Asha Austin volunteer हूँ. Been volunteering since 2006 and currently playing the role of chapter coordinator. In the past, I was a steward as well for project Gramin Shiksha Kendra. Okay, so that's my introduction. Ranga, you want to go next? Yeah, thanks, Mohit. Hi, everyone. I am Ranga. Been a volunteer with Asha since 2008. I'm also the chapter projects coordinator and steward of one of our projects, Kushbu Welfare Society. Yeah. Good to meet you all here. नमस्कार, मैं सुब्रा नेतन, आशा ऑस्टिन के साथ 2017 से, बट आशा के साथ सिलिकॉन वैली में 2006 से वॉलंटियर हूँ. ऑस्टिन के लिए मैं टीम आशा कोऑर्डिनेटर एज वेल एज आशा ऑस्टिन ट्रेजरर, and recently I am also the Asha wide treasurer. Small introduction. आप सबसे मिलके खुशी हुई. और मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, बट फिर भी अली हसन जी, आपसे शायद पहली बार मैं बात कर रहा हूँ. तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का स्टीवर्ड्स हूँ ऑस्टिन चैप्टर की तरफ से. तो सुरेश जी और राजाराम और कृष्ण जी के साथ हम लोग काफी बात करते रहते हैं इसके बारे में, और साथ में मिलकर काम करते हैं इसके लिए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली हसन है. मैं आशा ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे सरकारी विद्यालयों में मैं कोऑर्डिनेटर और एज ए कंप्यूटर टीचर के रूप में जनवरी 2020 से काम कर रहा हूँ. जनवरी 2000 से? जनवरी 2020, 2020. जी, सभी को नमस्ते. मेरा नाम सुरेश राठौर है और अभी यहाँ मनरेगा मजदूर यूनियन नाम का एक संगठन है जिसके साथ जुड़ के मैं काम कर रहा हूँ. आशा ट्रस्ट से करीब 20 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ, तो 20 साल से जुड़ के काम कर रहे हैं. इससे पहले हम लोग शिकागो के साथ भी काम करते थे. अभी यहाँ पर हम लोग जो है कि सरकारी विद्यालय में जो कंप्यूटर की शिक्षा शुरू हुआ है उसके जो है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ. जी, स्मॉल इंट्रोडक्शन में इतना ही. बहुत खुशी हुई. हेलो राजाराम. Hello Subra. Good to meet you again. Good to meet you. Yeah. So let me I guess we are doing a round of introductions, right? Sorry, yes. I joined a little late. Somehow I thought it was at 8. I made a mistake, so not a problem. I am Rajaram. I am the coordinator of Asha Chennai, and basically, so I was the main person behind this introduction of computer science curriculum and introduction of technology driven education here in Chennai. So when we got the opportunity to do it with Suresh and Varnasi, we started doing that at Rajatalab as well. So yeah, I've been a volunteer with Asha from my days in the US, like in mid 90s. So then I came back to India in 2000, and since then Asha Chennai started at around 2002-03. So I've been with Asha Chennai ever since its beginning. Very nice. Good, thank you. I think we got everyone. I think there's Girish and Ankita. Girish, yeah, Girish and Ankita. Girish, you wanna go next? Sorry, I was. I thought I was not. I got muted for somehow. Yeah, my name is Girish. I was associated with Asha a long time ago, and so I'm trying to get back into it. But first, I wanted to just kind of observe
what you guys do and try to understand it better. I've had a couple of conversations, Mohit, and very briefly Rajaram. He was just off to some visit, so I couldn't really talk a lot. I have a plan to talk to Saurabh. That is still kind of in the works. I want to talk to Ranga when I can, as Subra as well. So that's what I am in. I'm in the observation mode to see what's going on, how I can contribute. Awesome. Fantastic. Ankita. Hey guys, I'm Ankita Deshmukh. I moved to Austin a year ago. I'm fairly new to Asha chapters. I'm fairly new volunteer with Asha. I will be stewarding a project called Reward Trust, where we are helping fund teachers in schools in India where they don't have teachers for children right now. I'm very new to the process myself, and yeah, that's about it. Thank you. Saurabh, go ahead and start with your agenda. Yeah, so let me give a very brief intro about the project. And again, within the group, I know Girish and Ankita, you probably are not very familiar. But this project, as Rajaram described earlier in his brief introduction, is basically the focus is imparting computer education, and also through the use of computer, some assisted learning on some of the core subjects. And Rajaram and his team has been doing some great work in Chennai. They've developed a curriculum around Kanini app, and so they try to map the coursework with the right kind of material to assist students in learning not just computer science, but through computer science learning some core subjects. And I think that's the same kind of thought was brought in to explore in the Rajatalab area. Now again, this is again the language is different, so there was a lot of work needed to before they start the core teaching the core curriculum through computer science, to map those coursework in the local language, the Hindi in that area. So yeah, but again, the objective is the same within the project in the Rajatalab. It's basically imparting computer education to the kids of primary and upper primary, and then through the use of computer assisted learning on some core subjects. So since the project started, I think at this point, and Sureshji, correct me, I think there are like 6 or 7 schools, 6 schools, I guess. Most schools at this point now have a computer lab. सुरेश जी आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हाँ नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बस मैं ये बोलने के लिए किया था कि कुल 7 हैं, अपर और प्राइमरी मिला के कुल 7 विद्यालय हैं। Okay, 7. Thank you for correcting me. So 7 schools, including primary and upper primary. And the focus in the last few years, and again there was a little bit of a COVID dampener like in all projects, but the focus has been first computer education, and then there was a lot of work happening behind the scenes while COVID was on to map the coursework, and which is what Rajaramji will talk about in the next or the first item in the main agenda. So let's go through that, and then we'll get to know more by visiting the schools and visually seeing the computer labs that we set up, the students and what they're learning. Great, thanks. So should I take over, Saurabh? Should I present my screen? And please go ahead. Yeah. Okay. Yeah. So I'll start presenting. 1 second. Sure. Are we not going to hear from Ali? And I think he's new. I don't know. You guys probably know him really well. Girish, so no, not really. But Ali will have his turn.
but let's Okay. get the. I the thought process Ali going. already introduced himself. He did Otherwise, introduce. Oh, okay. Yeah. Missed that. Yeah. Sorry. Yeah, Okay, carry on. We went around everyone's introductions. Yes, so, yes. Okay. yeah. So let me kind of just so right now the content that I've opened through Asha Kanini is the Tamil Nadu content, but I'll quickly switch over and show you some of the UP contents as well. So, but the broad app and our what we were pursuing is kind of the same both in Tamil Nadu and UP. So since I am since I don't know Hindi and I know the Tamil Nadu work a little better, I was going to talk about that a little bit and then kind of quickly show you what we have done for UP as well. So so the like where we started this project was like when we started like actively engaging with the schools and trying to do stuff with computers. So you are able to see my the Asha Kanini app, right? Yep. Yes. Yeah, we can see your screen. Yeah. So when we went to the school, so we noticed that so there is a lot of pretty good contents that were already available in the various government schools. So there was an initiative back in 2010 to 12 timeframe called the CAL Center, Computer Aided Learning Center. So the government had given computers to some of the schools, and they had also given some contents, developed some contents for the computers and distributed it to the schools. So some of the schools had this content. So some of the schools we were working with were these CAL centers. So I'm just showing you one of the things that was developed and given to the CAL centers. That is, this was developed by Asim Premji Foundation. So they had developed a whole series of contents which was aligned to the like classes 1 to 8 kind of curriculum, and these were distributed to all the schools. But what we were seeing was like they were completely clueless about how to use that, and this was not it was not completely aligned to the Tamil Nadu curriculum. You had to still, so there will be items aligned to all the curriculum, but it was a little difficult to figure out which CD has which content. So they had some 10 CDs from Azim Premji Foundation, and like the total, like there were another 10 CDs from Hello English, which was developed by Regional Institute of English. So they had a lot of very good quality contents, but the teachers lacked the ability to use that. So what was happening was like basically they were not very comfortable with computers as well. So they didn't they were every time they were using these DVDs. So by the time we started going to these schools and checking all these things in 2014-15, most of the DVDs and CDs were already pretty scratched and damaged and weren't working properly. And teachers didn't have a clue. So if there is some really good content to teach multiplication, for example, in that Azim Premji Foundation, they wouldn't know, okay, this 7th CD contains this really good activity for teaching multiplication. How do you expect a teacher to know that? Like they would have had to view all the 40 DVDs, be familiar with all the contents, and then they can use it. So that's a little too much to expect of any teacher. So it wasn't really getting used at all. So they had good contents, but it wasn't getting used. So what we felt was missing was an ability to map all these contents to the curriculum, that is lesson. So if you are teaching lesson number 3 for class 4 in term 2, so what are the contents that are available for me? So it wasn't mapped and made available at that level. So we started out doing that in 2014-15 time frame, 15-16 time frame. We started doing that. So we continued doing this in Tamil Nadu all these years, and during the Corona, this gave us a good alternative to how to engage our teachers. So the teachers were also running mini schools, so that was one of our major initiatives, but they weren't able to do 2 sessions or things like that. All their entire 6 hours was not used. So in situations like that, we also got them to do this content mapping work. So basically, Azim Premji's like Azim Premji Foundation contents are available. So
initially we started out with, I'll show you a list of packages that are available. So these are all the packages that are available. You can also see the packages in our that's it. Sorry. So we have a website, kanini.ashanet.org. In that, if you go to our packages section, that shows all the packages and gives a brief description of each. So if you go to the Azim Premji Foundation, it kind of gives a brief background of that. So so we have some we have a total of some 70, close to 70 packages right now. The Azim Premji Foundation is one of them. So we initially started out with packages that the government had provided these schools already. Then we started looking around for good third-party packages, that is free contents which are out there on the web. And we found some really wonderful contents, right? Like many of you would be familiar with Khan Academy. So Khan Academy contents are all free, for example. That's the kind of content that we were looking at. And actually Khan Academy contents are translated to most Indian languages as well. So the Khan Academy videos are available in most Indian languages. So that's one of the contents that we have done. So there is a lot of websites were also mapped. So another really good free content is GCompress. So GeoGebra is a maths simulation tool. So the Hello English is something that the government had created. So we did an analysis of a whole bunch of websites and these kind of tools and selected these 70. So we would have analyzed, I'll just show you briefly, like these are all the websites and contents that we analyzed. The green ones are the ones that we finally chose because those are free. Those are like good quality content. So our teachers went and analyzed all these things and we picked and chose these contents that we decided to include with Asha Kanini. So this Asha Kanini, so let me give you a little bit of a tour of Asha Kanini. So this is a fairly for people who are from a technical background, it's developed using React and Node, and using Electron. It has been made locally available. It's not a browser app. It is a standalone app, and it's available on Windows and Android. Android, we developed it using React Native and Node. So in Android also, it's a standalone app. So one of the first restrictions that we imposed on ourselves is it should work over without the network. So in most of the rural areas in India, network access is there in most places, but very patchy. So and when we started in 2014-15 time frame, network access wasn't even available in many of the villages. So in such a situation, we decided to make this accessible without the network. So even without the network, most of the contents would work. So the idea is it will get downloaded to your, when we install the software itself, we install some of the important contents. And then when you use it the first time, you can download it and make it locally available. After that, the subsequent times when you use the content, you wouldn't need the network at all. So that was one of the things that was important. And as you might be aware, React and Node and all that are fairly platform independent. So the same Electron React Node app would work on Linux and Mac and Windows. And so if you had a Raspberry Pi device with a Linux installation, the same thing would work there as well. So we made it platform independent, network independent, all these things. One of the so the main way to access contents here is through the search contents tab. So you can search based on class term subjects. So if something like 4th standard, 2nd term,
maths. Oh, sorry. I have to remove the packages ahead. So I'll also select lesson number 2. So this is the contents for, so lesson number 2 is a lesson on numbers. So these are all the contents which are available for that lesson, the numbers lesson in maths second term. As you can see, there is just a lot of contents that are available. The thing is, we are sorting it by package name. It's going only up to M because we have a limit of displaying 500 entries. So there is more than 500 contents available just for that one lesson. So enormous number of free contents is available out there. We couldn't go past M because we were only displaying the top 500 hits. So enormous amount of contents is available, especially for simple things like addition and subtraction and things like that. Pretty good quality contents either. So when I say content, what do I mean? Let me just quickly show you what I mean, various types of contents. So this Diksha is something that's a platform which has been developed by Asim Premji Foundation. I'm viewing it as a student. So sorry, let me directly go to the so Diksha is developed by sorry, I said the wrong thing. It is developed by Step, which like not Azim Premji Foundation. It's developed by Step, which is run by Nandan Nilankeni and his wife. So they are running Step. So this is adopted pretty much by all the state boards in India. So Tamil Nadu, UP, Chhattisgarh, at least Rajasthan, I've seen a few of them. It's adopted by all this thing. So the textbooks these days have a QR code, and if you click on the QR code, you get to these contents. So whatever can be downloaded from, so the government education departments have been asking the teachers to use the Diksha contents. And so we have kind of made it easier by making the contents locally available. So there are videos, there are worksheets like this. So there are some exercises which are online. So this is a web link which will open in a browser. So these kind of contents will be available only if net is available. But most of the other contents, the worksheet that I was showing you, will be available even if the net is not available. So various different types of contents have been made available through our this thing. So one more of the thing that I just want to emphasize. So when people think of contents for teaching, they often think of videos. So we call things like videos passive contents. So research has found that passive contents are often not the best way to teach using technology. So especially if you put on a video and the teacher is not making it interactive, the pedagogical significance of such a thing is very, very low. So basically children don't learn at all under such an environment. So there are a lot of active contents. I'll just show you something. So NLVM is a very nice utility. So that is like basically whatever we are calling active content. So I hope you can see this. Sorry, there is a wait. Unfortunately, the applet doesn't become any bigger. So only the screen becomes bigger. We can see. So we can see. Yeah. So here, like basically this shows the
I can change the multiplication. You can see that as a rectangle. So this is a nice tool for you to use. So now it like here I have chosen 7 here and 7 here. So the product is like 49. And here you can count the squares and you will get 49, right? So if you do something simpler like 4 into 3. So 4 into 3 is 3 into 4. So this helps the teacher teach the topic, and children can kind of play with this also, how negative numbers also works. So that also is like children can see that. Let me show you another one that's really good in NLVM. So, Rajaram ji, one question I have is, like you said, for every topic, there's a lot of content. Like, how do teachers like know like which is the best one to pick? Like, is there a recommendation in the tool saying that these are the top 10? I am going to like come to that. I'll be coming to that. That will be my very next topic. So here, so this I've often found to be a really good way to teach place value and how borrowing works. So now you cancel these out. So I can cancel out a 10 and a 10, but now I have to cancel out this one. I don't have that. I borrow a 10, put it here. That immediately breaks into 10 ones, and I can take one and this thing. So whatever I have done is also shown here in numbers. So I borrowed a 10, so this became 4 tens, and the one became 11 ones, and I was able to take out 2 from that and get 9. The remaining 4 tens, I took out 1 from it and got 3. So you can kind of, the children can work on this by themselves. So this can be a really good activity before they kind of at the stage where they learn place value and borrowing. This is something that the teacher can show the children and use along with the lesson. So the idea is, see, these simulations, like, so this NLVM, it stands for virtual manipulator. So if you have the base 10 blocks and you can teach with it, that will probably work better. But even then, if you have 30 children in the class, schools will rarely have anywhere close to 30 base 10 blocks. So this kind of thing works better. So the children can experience things a lot better with things like that. So these are NLVM, GeoGebra, PHET. These are all wonderful ways to teach concepts. So this is what we are referring to as active contents. So these are things that the children either can use on their own, or even a teacher can show these things on the screen. So these works far better in terms of teaching than this thing, the video, just showing a video. So coming to the question that Saurabh asked, so even on something like, so I have done a filter for contents which relate to subtraction. As you can see, there is an enormous number of contents. So how does a teacher choose which one to use? So that is so we started grappling with the problem in a couple of years after we started. So we started developing what are called, we are calling them lesson plans, but these are not truly lesson plans. These are more like basically digital resources, a collection of digital resources which can be used to teach this. Sorry, I'm searching for our lesson plans. Give me a minute. That's the problem. There's a math spelling and there is a math spelling. So I'm now giving you all the lesson plans for 4th standard term 2, which was what we were seeing earlier. So 4th standard lesson 2, so we have created these lesson plans. So I'll show you the numbers lesson plan.
Oh, I think I put the term subtraction. Sorry about that. I'll search it without the term subtraction. So lesson 2 numbers lesson plan is over here. So the lesson plan is what our teachers have developed. So this is some of the kind of things where we found there was a gap and we started developing it. So this gives a pre-test for the lesson. So the concepts that they need to know before doing this numbers lesson. So teacher can give this as an exercise, basic multiplication, basic things that they need to know before the 4th standard numbers lessons. So that is given in the pre-test. Similarly, we have a post-test which tests what is taught in this lesson. So this is something that they can. So in this CCE pattern, which is followed by most of the state boards, we have something called a formative assessment. So this post-test can also be used as a formative assessment. So this tests all the concepts that were taught during this lesson. So mainly what was taught was multiplication of 2-digit numbers and things like that. So they have been. So there are basic questions about this. So they can work on these things at the end of the lesson. Some of the other important things that are there. So what are the physical manipulators that can be used when teaching this lesson? So base 10 block can be used, Ganitmala can be used, wooden rods can be used. So these are things that either Asha has distributed to the schools, or in some cases the government has distributed to the schools. So we are referring to, so once again, these kind of things are a lot more mature in Tamil Nadu in terms of our Asha Kanini work than it is in UP, which is part of the reason why I'm showing you the Tamil Nadu contents. So teacher material, these are things which a teacher can use outside of a classroom. That is, before going into a class, these are some of the things that a teacher can So this teacher instructions is once again something that we developed. These are minimum instructions that a teacher will be like. This is not a detailed lesson plan, but some minimum things that teachers should kind of be aware of before going into the classroom. So these are often things that teachers should emphasize in a classroom. These are things that so we created them using a really good trainer, one Mrs. Meena Suresh. So she created. So these are things that children often miss out. Teachers often miss out when teaching the topic in the classroom. And we are in the recent times, we have been trying to create more stories aligned with each maths topic. So this is a story that can that a teacher can. Let me close this. So these are stories that a teacher can be aware of and can tell in the classroom. The idea is not to necessarily show them in the classroom, but the teacher learns these stories and then be able to talk about that. Classroom activities. So once again, see, very often people are, so when they look at contents, they often think about videos. So as I was saying that, so these are classroom activities, once again, are things that are done without a computer in a classroom, for which instructions are made available on the this thing. So these are activities that, like, once it's in some cases, some of these might require a PDF to be printed. We provide the PDF, we provide the instruction about how the teacher should execute that activity in the class. So we have provided all these kind of information for a teacher to conduct a classroom activity in a class. And these are often the best ways to teach conceptual clarity. If the children really need to understand multiplication or addition or subtraction or whatever, stories and activities are the best way to do that. Showing things on the computer is often not the best way to do that, right? So this also recognizes that reality. Then the next thing, contents for teaching lesson. This is
contents that can be used while teaching the lesson, various way. So as I was saying, lesson 2 numbers, the main focus seems to be multiplication. So GeoGebra has a multiplication tool. PHET has a multiplication tool. So all these multiplication tools are also aligned very well with what is available in the textbook. So these are not out there. So the lesson plans picks the best tools available, which are very well aligned to what is there in the textbook. And finally, contents for practicing. So once you teach the subject, these are various games. So for example, multiplication game in GCompress, I'll quickly show you that. So that's not launching. Oh, it finally opened, sorry. So, oh, something false. Before that started falling, I started answering. So, Rajaram ji, just a quick time check. We have like 12 to 13 minutes for this item. So just want to see if you want to switch to a little bit of the mapping work for the Hindi also. sure. Give me a minute. So, the contents for practicing are things like these games, which can be used after the concept has been taught. So our lesson plan is an attempt to capture all the digital resources for teaching a lesson in one place. So just one brief thing before I go to the UP curriculum. So ways to access the content. So you can do the search. We are working on one more thing, which is a direct review, nothing very important. Let me move this. Oh. So as I was saying, the textbooks have QR codes in them. So this is a way for you to, now, unfortunately, I can't scan the QR code. I can enter it. Sorry, I didn't come prepared for that. I don't remember a QR code right now in the textbook. So you can enter there is a 6-digit code, which is typically available below the QR code. You can enter that and directly launch the lesson plan. So these are ways in which, and another thing is if you have the textbook in your hand, you can just scan the textbook right in front of the camera, and this will directly take you to the contents. So these kind of things are make it easy for teachers to access the contents. And directly launch Diksha is provided because most teachers want to use Diksha because government pressures them to use Diksha, and we want them to use the lesson plan. So those two can be directly accessed from this point. And teachers can bookmark their favorite contents, and so we would encourage the teachers to, if they have a laptop, take it home, look at this and bookmark the contents that they want to use in their classrooms, and use it when they come into the classroom from the bookmarks. So bookmark is another thing that we provide. So finally, there is a library view here, which is basically designed for children to use. This doesn't contain contents which are used for teaching, but contains contents like games and videos which the children can directly watch. So let me quickly move to the before that, I just had a question, like from my understanding, right? So you have this package that is there in a computer in the classroom. The teacher uses it to develop her lesson plans and introduce the motivation tools or stories and stuff like that. And when it comes to active learning, so is it like you have few students, like there's
as part of the lesson itself, they directly are involved with the content. Is it how does it work? Is it through computers or tablets, or how, like, for example, if a child right wants now, like all the teachers that we are appointing to the schools in Tamil Nadu and UP, they all have a laptop with themselves. Okay. And in many of the schools, we have managed to get corporate donations to provide additional computers in the school. In UP, all the schools being fairly big, each of the schools has some 4 or 5 computers. So they have a computer lab set up. So the teachers bring the children to the lab. So we usually put 3 children to a computer. So if there are 5, 6 computers, you can manage 15, 20 students. There will be a laptop belonging to the teacher also. Okay. So some 6 laptops, we can manage 15, 20 students. So they will take turns and play these games. So what usually the teacher does is, when a teacher walks into like, let's say that they are going into the school today. This is just the beginning of the academic year here in Tamil Nadu. So they know that if you are teaching 4th standard, they will be teaching lesson 1. They can also ask the teacher what they are teaching. That's also certainly possible. So they will typically be teaching lesson 1. And so lesson 1, they have a lot of contents which are available for lesson 1. So they will use the lesson 1 contents and show that to the children. Now, so I just changed it so that now what we have is the UP contents over here. So it's the exact, if you were seeing what I was doing, I just went into Windows Explorer, renamed my Tamil Nadu folder to a different name and renamed UP folder to Kanini. So the app is exactly the same. So depending on whether you have the Tamil Nadu contents or the UP contents, it picks different things. So now you had some 65 packages available for Tamil Nadu. Unfortunately, we don't have that many contents available for UP8. We have whatever we found was the important contents which we were using for Tamil Nadu. We also made them available for UP. So we have mapped these 20 contents to UP. Some of the things that I showed you, like G Compress, Azim Premji Foundation, these are, some of them are available in Hindi, some of them are English contents which are like anyway equally useful, whether it is in Tamil Nadu or in UP. So things like Azim Premji Foundation, Khan Academy, these are contents which have been translated and available in Hindi as well. So we have these contents available in Hindi. Diksha, once again, it's the UP Diksha. So this is totally in Hindi. So if you are looking at all the Diksha contents for, say, class 3, for subject, say, Hindi. So this is showing all the Hindi contents in Diksha available for that. So they have done this mapping work. One thing we have not had the time to work on yet. See, most of this mapping work got done, as Saurabh was saying, during the Corona closure. So the teachers had a lot of extra time, so they could do the mapping work during that time. But once the schools reopened, we have not had enough time. We don't have a dedicated resource in UP to do this work. So maybe one of the things that we should, we will be proposing during this upcoming budget discussion is, like, free up a little bit of the resources for each of the teachers. So assign the work for teachers for, say, 4 days a week, give them 1 day to do content work. So we are going towards that in Tamil Nadu also. All the computer teachers, we send them to school for 4 days a week and give them this kind of content work for 1 day a week. So if we do that, these kind of things will move a lot faster. So that's something that I'll discuss with Saurabh a little later, but that's something that I hope we can do in our UP project as well. So basically the mapping work has been done for these 20 what we consider important packages. We haven't been able to do the lesson plan work. That is where we are. So otherwise the app features are exactly the same. You can search, you can scan the QR, like
the textbooks in UP also have QR code aligned with the Diksha curriculum. So you can scan the QR code in a lesson and access all the contents. Directly Learn's lesson plan should be taken out for the UP curriculum. It's not available. So the app look and feel. So some of these kind of things, so you can also type in Hindi, but I won't be able to do that. But yeah, you can type in Hindi. So if you were to do, those kind of things, you can search for contents in Hindi. You can like all those things are available in the app, and it like supports a Unicode format. So all the descriptions and these things that you. Let me also briefly show you just one last thing before I close that. So what has been done really in terms of mapping? I keep saying mapping work. So some of the things, so all the lesson titles for all the textbooks in Hindi needed to be entered in a file like this. So we then process it and take it into, we convert it into JSON format, and this is made available. So these are all the lessons and the English title for it and the Hindi title for it. For all the classes 1 to 8. These have been made available. And for each of the packages, I'll pick Diksha. That's let me not pick. Okay, yeah, I'll pick Diksha. That's a humongous package. I hope OpenOffice doesn't crash. Every now and then OpenOffice crashes because there is just too many rows in that. So for each of the contents in the this thing, they give an English title, a Hindi title, a thumbnail picture for that. Then they map it to a specific lesson. Subject Hindi, medium Hindi, class 1, term 1, lesson 1. And what kind of content is it? Video, then a description in Hindi and a description in English for that content. So they do this for all the contents that are available. As you can see, that Diksha package alone has something like 2000 items of content that is available. And we have some 20 such packages that are mapped to the UP curriculum. So Rajaram ji, question for you. So the major work in UP is now adding more packages, or we have the required number of packages, we need to create a lesson plan? So I think the focus needs to be on lesson plan. That's one thing. Second is, so some of the contents needs to be translated into Hindi. So Asha, we ourselves, I was showing you that story, right? Math story, a story to introduce multiplication with. Those kind of contents are these days available in English and Tamil. It would be good if we start translating that to Hindi as well. So the lesson plan will be one thing. Translating contents which we have created in Tamil Nadu for Hindi, those are two areas that would be those will be the two main areas of work. So when you say translating, does it, I mean, and again, I'm a little ignorant of technology. Is it more of a technology thing, like somebody could just dub it in Hindi language, or is it more like somebody needs to, I mean, is it a just technology thing, or is it like if somebody needs to speak that story in the language and record it? So they will need to understand the story in the first place, and then whatever the original recording, which might be in English or Hindi, English or Tamil, they will need to understand that and translate that into Hindi. So I can show you some, like, see, sorry. So we have created, so the contents in Asha Kanini also includes contents for teaching computer science. The curriculum for computer science is not something prescribed by the government. That is our own curriculum. That is another major effort. I have not spent any time talking about our computer science curriculum. We can keep that for a later time. So now this is lesson plans which we have introduced for classes 1 to 8 for teaching our computer science curriculum. So here, if you look at these contents, often, I don't know if I have picked one link to copy here. So that video, so this is something messed up. I'm sorry about that. So the computer science lesson plans has a lot of
videos in it. So this is available for UP as well as I'm just showing you the video directly. So class, some class 5, lesson plan 4. That doesn't have a video. I have to pick one which has a video. Sorry about that. Solution, probably. Solution has a video. So this is some exercise that has been. பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஃபைல் தான் நீங்க ரெடி பண்ண போறீங்க. அதுக்கு முதல்ல ஓபன் ஆஃபீஸ். So I'm stopping this video. I don't think you want to watch this video. So this video is a lesson on something to do with OpenOffice. I don't know what this lesson was. So we have created computer science lesson plans to teach the children what to do, and this also ends up teaching the teacher about how to do that, because the solution video is available. So that solution video and things like that have all been done in English and Tamil. Someone will need to do it in Hindi. So they will need to watch this. So most of them know what needs to be done. They are already teaching computer science. It will be, so the idea in creating this curriculum and making it available is to kind of allow us to go beyond that. So if we are going to propose this as a curriculum to the state government or whatever, providing this provides makes it as a training platform as well. So teachers, we don't need to handhold them too much, because all the solutions and everything are all available. Even a teacher who only knows some minimal things will be able to teach our computer science curriculum. That's the idea. Okay. So just a quick time check. I know we are a couple of minutes over, but we are eating to the, I think, a little bit of a break time in between. So any questions before? सुरेश जी बताइएगा कब switch कर सकते हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब बच्चे तो क्लासरूम में आ गए हैं. अच्छा, तो we have like 2 minutes. Any questions before we move on? Yeah, I'm good. Yeah, thanks a lot, Rajaram, for the demo and explaining the various concepts and ideas. Yeah. That's great. Yeah, I know you wanted more time, but this is for this meeting because we had so much. But again, yeah, this is good overview of. So the one part that I have not done anything at all on is the computer science curriculum. So there is a lot of work that has been done on the computer science curriculum. I was talking more about Asha Kanini. Since Saurabh, you were asking about that, and like we were attempting this 2-3 times and didn't do that. So I focused on Asha Kanini. So the computer science curriculum, we have created a rich curriculum for teaching computer science, both digital literacy and programming, and for classes 1 to 8. And we have kind of decided at what level we can teach, say class 3. So we are introducing from the point of how to use the mouse and keyboard all the way to programming using loops and recursion and things like that by class 8, and how to use the internet to send emails and various social media. So we have a fairly rich curriculum which spans that entire gamut, and basically it's a completely activity oriented. There will be very little that is just written in a blackboard or taught and asked to write in a notebook. It's completely children learn by doing things on computers. So that curriculum. So once again, it's you can download Asha Kanini and try this out. All of you can create your own account and just do this. I kind of talked to Girish a little bit about that, but you can all, so that kanini.ashanet.org, that website has Asha Kanini. It's downloadable. You can create a guest account. Let me just quickly just show that as one last thing. Oh, a quick question, Rajaram. So this computer science curriculum is available both for Tamil Nadu as well as UP at this point? That's correct. Okay. The computer science curriculum is like our curriculum. It's anyway mostly English, right? So it is, so okay. When I say computer science curriculum is available for UP, it's just our computer science curriculum. It's not aligned for any state board or any, there is no curriculum in Tamil Nadu state board for classes 1 to 8.
even in CBSE, formally from NCERT, there is no curriculum. So there is no curriculum, to my knowledge. There is no formal curriculum available for teaching classes 1 to 8 computer science anywhere in India that's being practiced. So schools do teach computer science a little bit, but it's usually Frank Brothers textbook or something like that. They use something like that. And whatever we are doing is far better than the Frank Brothers textbooks, which are used by most of the CBSE schools, at least in Chennai, that I am aware of. So it's a really good curriculum, and it is being used in UP right now. The same curriculum is being used in UP and Tamil Nadu. Okay, so I got it. So the teachers in UP have learned, they are proficient enough in English to be able to communicate and do the computer curriculum in UP. Is that right? Correct. So see, English is normally how this works all over India is the key phrases like bold and italics and toolbar and press the close the window and things like that, close and open and things like that. They mostly use English words when they talk about computer science. So when you refer to something, click this button, in the button I click panna will be how they will say that in Tamil, and equivalent I assume in Hindi. So yeah, they certainly know enough Hindi. Actually, the group of teachers we have in UP are like very good group of teachers. You will see that. So yeah, they certainly know enough Hindi to be English to be able to manage that. That's not an issue at all. Okay. Thanks. Yeah. So just one small thing. So there is a registration page in now that since I've already logged in, it's showing the login page for logout and login or whatever. But yeah, if you go into registration, there is a guest account here. You wouldn't use this. This is meant for teachers. They have to identify which school they come from and use that. You can create a guest account by clicking here and log in using that guest account. So, and then be able to use all the functionality in the Asha Kanini. So I would recommend, please download and try out Asha Kanini. If you have any feedback, please do share that with us. Okay. And one last question. So is Asha Kanini app available on handheld device like a smartphone and stuff? Or is it laptop so it is based? available for Android. The Android feature set is not as complete as the Windows feature set, but it's coming there. So you can download a version from Play Store, search for Asha Kanini, it's there on Play Store. Okay. ASHAKANINI, it's there on Play Store. You can install it on Android as well. But by the way, so some of the things is you might want to install it in Windows. I think the registration is not, guest registration is still not done in Android. Only the teacher registration is done. So there might be some such deficiencies. So yeah, the Windows version is more complete than the Android version. But yeah, Android version works. So for people that who have gone past that registration and installation and things like that, the Android version provides access to all the contents just like the Windows version. Okay, thank you. If you have any trouble, contact me. I'll walk you through that. You know, I was coming more from given the fact that these days phones are more easily available and accessible, and you know children have them probably as well. So is this a system that can be used on the phone or not? Absolutely, yes, it is available on the phone. So see, basically most of the contents are available on the phone, but one example is Azim Premji Foundation. They have developed it using Flash as like they have given thankfully executable which encapsulates that Flash, so you can run completely without requiring Flash on the browser or things like that. But these days, as you know, Flash is not available. So all we have right now is a set of Windows executables. We don't have it available on Android. So there are various packages which are not available for Android, but whatever is available on Android will work with it. Our app is available on Android, but all the packages may not be supported. So out of the 65 packages, something like 5 or 10 were not portable in Android. So
All the other 55 or so packages are available for Android. Okay, thank you. Yeah, so I have a general question. So we can take it offline as well. So one thing is there any work with the government of Tamil Nadu to try to have other government schools adopt this? That is one. And two, any plans to monetize this so that, say private schools that maybe can afford to pay, you can use that money to, recruit more teachers and scale more, right? So I don't know how that monetization would work here, but. Yeah, so to answer your first question, yes, we are attempting to get embedded into the government system more properly. So one of the things that we are doing is, so we have a broader program funded through IIT Madras Pravartak, where we are training wherever computers are available in Tiruvallur district, we are installing Asha Kanini and training the teachers on how to use that. So we have done that in about 350, 400 schools. We intend to, so there are a total of about 1,400 schools in Tiruvallur. Out of the 1,400, the number of schools which have a working computer is about half of that, some 700, 750, 700 schools or so. Out of the 700, we have covered about 400 schools in Tiruvallur district. So this is one thing that has been happening. The other thing at a broader level, trying to talk to the education secretary, make this available in all the schools so that the government themselves train the teachers. We go into a train the trainer kind of model. We are looking into that. We are trying to get into that kind of a setup. We were not succeeded in doing that yet. So yeah, there is an effort to push it in that direction. And the second question, we have not done any effort to monetize it. Yeah, so this is available for free download on our server, and we see this as something that is copylefted. So even private schools, if they want to use it, I guess they can use it for free. If they call us and ask us to give some training, we usually recover the costs from them. But beyond that, we are not really charging anyone anything. We have not done any effort in that direction. Okay, because the success is through scalability, right? So you have been wanting to scale it. So it's trying to see what else can be done to help that effort. Yeah. So now there are something like some 1,500 teacher registration. Some 500 schools are using it. Sporadically, not continuously. Yeah, the idea would be to kind of make this the standard platform for delivery of contents by the government. But yeah, we are still not there yet. Thanks a lot. Yeah. Okay, cool. So सुरेश जी कैसे इसको स्विच कर सकते हैं? जी, तो अभी हम लोग आगे बढ़ाएं इसको। जी, इसको कैसे बढ़ेगा, कैसे होता है ये मुझे नहीं मालूम है। नहीं, आपका वीडियो आ रहा है अभी? नहीं, वीडियो आ रहा है, पर ये इसका वीडियो स्कूल का कैसे दिखाई देगा वो पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं है कि कैसे इसका पीछे से होगा ये, ताकि पीछे का हिस्सा दिखाई दे। अरे दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा आगे, अगर आप आगे ऊपर उठा के थोड़ा करेंगे तो दिखेगा। दिख रहा है पीछे का हिस्सा? अच्छा, पीछे का दिख रहा है, पर मैं इधर दिखाना चाह रहा था। ये मेहदीगंज प्राथमिक विद्यालय है। ये कक्षा 1 से 5 तक का यहाँ पर क्लास चलता है। तो अभी हम लोग जो है कि चलेंगे जहाँ हम लोगों का ये लैब बना हुआ है। ये हेडमास्टर का जो है कि ये कक्ष है, और इसके बगल में ही, ठीक बगल में जो है ये अपना जो है ये जो है कि कंप्यूटर का क्लास है। अभी बच्चे यहाँ जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो अली हसन आगे जो है कि बातचीत करेंगे। अली हसन जी। अली हसन जी, आप म्यूट पे हैं, आप अगर बोल रहे हो कुछ तो। ओके, सॉरी सर।
तो ये कक्षा 5 की लड़कियां हैं मेरीगंज प्राइमरी स्कूल की। तो ये अभी कंप्यूटर लैब में है। तो ये आशा कनिनी ही ओपन करके इसमें कुछ प्रैक्टिस कर रही हैं मैथ टाइप। आपको वीडियो दिख रहा है ये सामने? हाँ दिख रहा है। तो ये इन्होंने NLVM पैकेज है आशा कनिनी एप्लीकेशन में। तो इन्होंने ये खोला हुआ है और ये बेसिकली सबट्रैक्शन है, या मतलब 2 नंबर है। तो 2 नंबर में से ये इसको ये हाँ यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट है, 12 है 6 है। तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे। करो बेटा। तो ये सबट्रैक्शन है एक्चुअली NLVM पैकेज में आशा कनिनी एप्लीकेशन में। तो बेसिकली ये सबट्रैक्शन है। इसमें सबट्रैक्शन और भी बहुत सारे पैकेज है। जैसे मैं दूसरा खोल के दिखाता हूँ आपको। बच्चा खोलो, खोलो बेटा आप खोलो, कट करो उसे। तो ये अली हसन जी, ये अभी किस क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? किस क्लास के बच्चे हैं ये क्लास 5 के हैं। क्लास 5 के। तो ऐसे थोड़ा एक आइडिया दीजिए, जैसे ये दिन में क्या, जैसे हर क्लास का आधे घंटे या 1 घंटे का समय होता है, कैसे होता है ये? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें सारे क्लास के बच्चे आ सकते हैं क्योंकि स्पेस काफी है। हाँ। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें जैसे सारे क्लास के बच्चे, जैसे क्लास 5 के लड़के और लड़कियों को दोनों को बुला लेते हैं हम लोग। हाँ। तो इसमें क्या करते हैं कि लड़कियों को पहले एक सिस्टम पे 2-2 3 करके ऐसे करके बैठा लेते हैं, फिर वो अपना करते हैं। और लड़कों को भी हम लोग जैसे अपना पर्सनल लैपटॉप है तो उसको दे देते हैं, तो वो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जैसे इन्होंने आधा घंटा अपना कर लिया प्रैक्टिस, फिर उसके बाद लड़कों को हम लोग कराते हैं। अच्छा। इसका ऐसा है करो भाई अली जी, इसमें ऐसे है कि जैसे यहाँ पर टाइम टेबल बनता है विद्यालय में, उसी तरीके से हम लोगों ने भी यहाँ टाइम टेबल जो बना है उसमें अपना टाइम टेबल कि कौन से घंटी में जो है कि कौन से क्लास के बच्चे लैब में आएंगे ऐसा तय है। तो वो बच्चे आते हैं, करीब 40 मिनट का एक घंटी होता है, लेकिन हम लोगों को 35 मिनट के आसपास मिलता है। तो उसमें जो 35 मिनट में एक क्लास के बच्चे उसमें। तो जैसे 35, जैसे आज जो क्लास 5 की जो है, तो ये क्या पहले से डिसाइड होता है कि आज ये क्या चीज करेंगे कंप्यूटर पे? मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि आज ये मैथ्स करेंगे या आज कंप्यूटर कोर कंप्यूटर साइंस करेंगे? ये कैसे डिसाइड होता है? बताइए रोहित या अली जी। रोहित जी आप आगे बढ़ा सकते हैं। Yeah, good morning, sir, and everyone. Good morning. सर मैं यहाँ पे जब क्लास लेता था तो स्कूल में जब बच्चे आते थे तो मैं पहले जाके क्लास में बच्चों से देखता था कि उन लोगों का कौन सा सब्जेक्ट कैसे चल रहा है। जैसे गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, और अक्सर गणित और अंग्रेजी पे ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि हिंदी वाले जो कंटेंट है सिर्फ दीक्षा में है, उन लोगों को सिर्फ देखना है और समझना है। लेकिन अंग्रेजी और गणित के सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उन लोगों को करने की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो अक्सर हम गणित और अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस करते थे। और तो पहले देख लेते थे कि कौन सा सब्जेक्ट उन लोग का चलाने योग्य है, तो उस हिसाब से हम LVM में या फिर PHET में हम उस हिसाब से हम एक्टिविटी कराते थे। अभी लाइट कर गया तो शट डाउन करो बेटा, शट डाउन करो सिस्टम। ओके रोहित जी कंटिन्यू प्लीज। वो तो वैसे ही जैसे कि फिर बच्चों से देख लेते थे, और फिर जी कॉम्प्रेस हो गया, NLVM, PHET, और हिंदी का अगर रहता था तो हिंदी में जैसे कुछ और सामाजिक, जैसे उन लोग का EVS है, हमारा परिवेश है, तो वो भी दीक्षा में है, तो उसके वीडियो हम उन लोगों को दिखाते थे हफ्ते में या 2 दिन के पर। और क्योंकि 3 दिन ही मिलता था कि स्कूल पर, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता था क्योंकि अगले 3 दिन हमको अपर में जाना होता था।
तो इन तो वहाँ सारे पर बच्चों को कंप्यूटर का सारे बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है, मतलब इन लोग को पहले से कि आप लोगों ने इनको बेसिक नॉलेज भी दिया कंप्यूटर का? नहीं सर, जब स्कूल शुरू हुआ तो बेसिक नॉलेज हम ही लोगों ने दिया हुआ है, जैसे माउस चलाना, फिर कीबोर्ड हैंडल करना। और उसके बाद जब शुरू हुआ उसके तब तक कोरोना वाला भी शुरू हो गया था। तो उस बीच में हम लोगों को बार बार बच्चों को बेसिक ज्ञान देना पड़ा, क्योंकि बच्चे को जो है इस कंप्यूटर सीखना सिर्फ यहाँ स्कूल में मिलता है, घर पे कंप्यूटर है नहीं, तो लोग जो सीखते थे घर पे जाके रिवीजन नहीं कर पाते थे। और कंप्यूटर में क्या है, रिवीजन बहुत बड़ी चीज है। तो अधिकतर हमें बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का बार बार समझाना पड़ा, क्योंकि जब स्कूल क्लोज हो जाते थे लॉकडाउन के दौरान या फिर किसी वजह से, तो वो सब दिमाग से उन लोगों के उतर जाता था कि कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना है। कभी कभी तो हम लोग से बोल देते थे कि जो तुम लोगों ने याद किया, जो तुम लोग को याद है अभी तक कंप्यूटर में क्या किए हो वो करो। एक महीने में एक दिन हम लोग को ऐसा भी कर देते थे कि जो तुमको याद है वो तुम करके दिखाओ हमको। तो कुछ बच्चे बढ़िया कर लेते थे, कुछ बच्चे नहीं कर पाते थे, तो उन लोग को फिर दोबारा बताना पड़ता था। तो और अभी ये फिलहाल हम बच्चे, लाइट चली गई है तो ठीक है यार रोहित, थोड़ा कहाँ कम समय में ही, क्योंकि समय हम लोग के पास जी कम सर, है, ओके सर, ओके। तो वो भी ध्यान देना है हम लोगों को। ये जी। वीडियो कैसे पलटेगा, हो कैसे बच्चे दिखाई पड़ेंगे? वो बटन हाँ होगा उसमें जी जी, हाँ हाँ हाँ, आगे। मुझे थोड़ा, तो अभी ठीक है। लाइट चला गया है, पर अभी ये लैपटॉप से, जो हमारे टीचर का लैपटॉप है, उस लैपटॉप से जो है कि जुड़े हुए हैं, और ये वही आशा करनी ऐप इन्होंने खोला हुआ है। अच्छा तो जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वांट टू नो समथिंग। हाँ, एक क्वेश्चन। सो ये अभी 3 साल से चल रहा है और उसमें कोरोना आ गया ऑफ कोर्स, बट 2020 या 2019 से चालू हुआ, राइट? यूपी में ये आशा कनीनी प्रोग्राम जी जी 2019। जी, हाँ, ओके, ठीक है। तो जो कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं बच्चे इसमें? आप लोग क्या कर रहे हो? क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? घटाना। अच्छा, कैसे घटा रहे हैं बताइए, दिखाइए। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, देख रहे हैं। दिख अच्छा, रहा है। अभी चला गया, आप दिख रहा है फिर से। तो ये मेहंदीगंज स्कूल में 8वीं तक की कक्षा है। ये कक्षा 1 से 5 वाले बच्चे हैं। अभी हम लोग इसके बाद 1 से ये 6वीं से 8वीं वाले स्कूल में चलेंगे। अच्छा, इसके बाद जी, तो ये 5 तक है। हाँ, ये कक्षा 5। अब देखिए, अभी लाइट आ गया तो बच्चे अब सब ऑन कर रहे हैं कंप्यूटर। करिए। तो ऐसे 7 स्कूल्स में लैब है ना? जी, एक कि हम लोग दोनों कंबाइन चलता है वो स्कूल हर्षोस का, तो वहाँ एक साथ ही है लैब, अदरवाइज बाकी जगहों पे अलग अलग लैब है। और इन लैबों के अलग लैब अलावा, है, इन लैबों के अलावा और एक कंप्यूटर सेंटर भी है ना? कंप्यूटर सेंटर जी, वो जो आपके ऑफिस में जो है, हाँ, वो जो किशोरियों के लिए वो चलता है। हाँ। ये हम लोग के लिए तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि एक लैब यहाँ खोला गया है, और उसके साथ बच्चे जो है, खासतौर से लड़कियां, जिनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है कि वो जो है कंप्यूटर में बैठ सके। और ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि देखिए, अभी लाइट आया तो तुरंत इन लोगों ने कंप्यूटर जो है कि अपने से खोल लिया, आप देख रहे हैं।
तो आई थिंक ये बहुत बहुत ही माने ये हम लोगों के लिए ये है जो तो है। अभी कंप्यूटर के ऑब्वियसली कोरोना की वजह से ज्यादा स्कूल बंद रहा है, 1.5 साल, कम से कम साल 1.5 साल, बट कंप्यूटर का बेसिक एजुकेशन इन लोग को आ गया है अभी। अब आप ज्यादा काम जो होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराएं, उससे मैथ्स जैसे सब्ट्रैक्शन या इंग्लिश या इस तरह का ज्यादा लैब में काम होता है। तो मैं किसी बच्चे को खड़ा करता हूँ, आप उनसे कुछ पूछना चाहे तो पूछे, हमारे लिए भी अच्छा होगा, ताकि पता तो चले कि कितना उनको पता है। तो आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सना। सना है, ये सना है, ये बोल रही माय नेम इज सना। शायद आपको सुनना ही नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने ये लगाया हुआ है। तो हाँ, नहीं, सुन रहा है, आप सुन पूछ रहा है। सकते हैं। अच्छा जी, आप कंप्यूटर सीखी हैं? क्या सीखे कंप्यूटर में? कंप्यूटर चालू करना, बंद करना, उसमें गेम खेलना, उसमें पढ़ाई करना, जोड़ घटाना। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम अगर खोजना हो कंप्यूटर में, खोज पाएंगे? कैसे खोजेंगे? गूगल पे सर्च मार के? अच्छा, तो ऐसे ही मार लेंगे कि उसमें कुछ चाहिए कंप्यूटर में? बिना इंटरनेट के हो सकता है? इंटरनेट चाहिए। तो ये बताइए जी, आप अगर कुछ पूछना चाहे तो। बिजली भी तो चाहिए। हाँ, बिजली चाहिए ऑफिस। ये मेरे लिए आपने नया कंटेंट बता दिया कि बिजली भी चाहिए। जी जरूर बताएं, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, या फिर और किसी बच्चे से जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये सब मोबाइल चलाने में फेमिलियर होंगे ना, इसलिए सीधे बोल दिया गूगल से हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो और कुछ पूछ ले, मतलब मुझे जो जितना जानकारी है मैं वही पूछ सकता हूँ भाई, मुझे भी बहुत एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ कंप्यूटर का। ये हैं बच्चे, ये जी कॉम्प्रेस चला रहे हैं बच्चे। अच्छी बात। ये भी जी कॉम्प्रेस ही चला रही हैं, इधर भी इनको ये भी जी कॉम्प्रेस ही चला रही है। क्या नाम है आपका? हाँ, साक्षी, ये क्या हो रहा है? कौन सा गेम? गेम खेलना अच्छा लगता है कि कंप्यूटर पढ़ना? तो कंप्यूटर से गेम खेलना अच्छा लगता है कि बाहर जाके गेम खेलना अच्छा लगता है? कंप्यूटर से गेम खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो ये है क्लास। तो जैसे सुरेश जी, जैसे ये क्लास 5 की लड़कियां हैं, तो जैसे इन लोग इन लोग जब ये लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो इनको क्या क्लास 5 का ही कंटेंट दिखता है कि कैसे कि वो टीचर लोग अरेंज करते हैं क्लास 5 का कंटेंट? इसमें क्या है भैया कि जैसे जो कक्षा 5 के बच्चों का जो सिलेबस है यहाँ पे, तो इसमें मैथ और बेसिकली इंग्लिश हो गया। तो जब भी ये क्लास में आते हैं तो इनके सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटी हो गया, गेम हो गया, जो आशा कनिनी एप्लीकेशन में है, तो जैसे उनका कुछ इंटरेस्टिंग उनको लगे, बोरिंग ना लगे, तो इस तरीके से हम लोग उनको टीच करते हैं। और कुछ सिलेबस से भी पढ़ाते हैं। दूसरा ये है कि उनको पता हो मतलब गया है कि जी, उनको पता है कि क्लास 5 के हिसाब का कौन सा गेम है, तो वो आते हैं जब, तो उसी हिसाब से उसको खोलते हैं कि हाँ ये कक्षा 5 का ये गेम है के लिए ये गेम है, ये जो है कि उसके हिसाब से हो सकता है, तो वो खोलते हैं और उसमें फिर वो काम करते हैं या उसको खेलते हैं, उसको देखते हैं। बेसिकली जी कॉम्प्रेस वाला जो वो है वो इस तरीके का है कि किस तरीके से जो है कि माउस का कैसे उपयोग करना है, कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक घसीट के ले जा सकते हैं। थोड़ी मैथ्स वगैरह का भी है, पर शुरुआत वहीं से है, तो इसलिए ज्यादा बच्चों को जो है इंटरेस्टिंग लगता है। एक क्वेश्चन और, तो जैसे आई नो कि अभी जैसे बताया राजाराम जी ने, अभी लेसन प्लान नहीं बने हैं पूरी तरीके से वहां पर यूपी में हिंदी मीडियम में, बट जैसे वहां पर कनिनी में तमिलनाडु में पोस्ट वो लेसन एक होता है ना, जो एक जिससे टेस्ट करने के लिए कि लेसन बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो उस तरह का कुछ टेस्ट करते हैं आपकी, जैसे मल्टीप्लिकेशन का कराया या सब्ट्रैक्शन का, तो अंत में कुछ एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको करके देना है कि इनको समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसा भैया कि इनको जैसे हम लोग ज्यादा होता लोड नहीं देते हैं, मतलब ये लोग क्या करते हैं खेल के माध्यम से ही, एक्टिविटी के माध्यम से ही, मतलब ये बस सीखते जाएंगे। और हम लोग ऐसा मतलब जैसे डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो हम लोग बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये क्लास रूम में जब रहते हैं, जो टीचर आते हैं, तो इनको क्या करते हैं कि मतलब बस वो जो चीजें जो चली आ रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, लिखो और याद करो और रटो उसे। तो हम लोगों का ऐसा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि इनको मतलब रटवाया जाए, डंडे से मारा जाए, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इनका जो मतलब एक खेलते कूदते हुए ये लोग सीखते जाए, लर्निंग करें, सीखते हुए, मतलब खेलते कूदते हुए, एकदम मतलब बोझ ना हो दिमाग पे इनके। तो जैसे इन लोगों का इंटरेस्ट कभी कभी होता है कि सर हम ये गेम खेलना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बेटा ठीक है आप ये ओपन कर लो, आप खेलो। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते जिसे फोर्स फोर्स हम कोई भी चीज नहीं करते हैं। अगर ये लोग जो भी कहते हैं कि सर आज मेरा ये खेलने का मन है, मैंने कहा ओके अब बेटा आप खोल खेल के उसको ओपन कर लो, ओपन करके खेलो, जो भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन जो भी करना हो। जैसे ये बच्चे हैं अभी इस टाइम ये जी कॉम्पिस में ही खेल रहे हैं, तो इनका हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग फोर्स नहीं करते किसी चीज के लिए, बस हम लोग चाहते हैं कि ये लोग मतलब लर्न करें, ज्यादा बोझ ना हो इनके दिमाग पे, क्योंकि जब ये क्लासरूम में जाते हैं तो जो क्लास टीचर इनके हैं तो उनका कुछ मतलब दूसरा तरीका होता है पढ़ाने का, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरीके से हम लोग भी पढ़ाएं। लेकिन अली जी कुछ टेस्ट भी तो आप लोगों ने पिछले साल लिया था ना, जब कुछ दिनों के लिए स्कूल खुला था, मान लीजिए अभी तो। हाँ टेस्ट मतलब हम लोग महीने पे एक बार मतलब लेते रहते हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, और उसी के बारे में पूछ रहे हैं सर। ओके, तो हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं, मंथली टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों का, हर क्लास के। और जैसे जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको कुछ मतलब प्रेजेंट भी दे देते हैं, प्राइज भी दे देते हैं, ताकि इनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़े और आगे अच्छा बेहतर कर सके। So, वो लास्ट 2 years है कोरोना टाइम में बच्चे क्या कर रहे थे, लाइक मिनी स्कूल्स आपने तो चलाया था लाइक टुवर्ड्स इन मिडल ऑफ लास्ट ईयर, राइट सौरभ? Middle of last year, yes. Middle of last year, like, or like just as like you can maybe translate it in Hindi also, right? So now that the kids are back, what sort of learning gap do they see? As in, is it like what was the effect of last 2 years of maybe minimal instruction or engagement with the children? एक्चुअली कोरोना फर्स्ट वेव में हम लोगों ने मिनी स्कूल तो नहीं चलाया, क्योंकि जो सेकेंड वेव आया था तो उसके बाद लोग मतलब राजाराम सर से मतलब सजेशन लेके कि कैसे कैसे मिनी स्कूल चलाना है, तो फिर हम लोगों ने सेकेंड वेव से शुरू किया। क्योंकि फर्स्ट वेव में हम लोगों ने कोरोना काल में मैपिंग का ही काम किया था सारा कुछ। सेकेंड वेव में हम लोग 4 टीचर हैं, तो हम 2 टीचर एक अपने घर पे ही, वहाँ पे 25-30 बच्चे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे टीच किया, और अजय रोहित भी अपने घर के स्कूलों पे घर के पास बच्चों को 20-25 बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से, और जो है मैथ इंग्लिश हो गया, उन लोगों ने टीच किया। उसके अलावा सरकारी जो टीचर हैं वो टीचर भी मोहल्ला जो है कि क्लासेज इस तरीके का जाके ले रहे थे, लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरीके का डर था लोगों में वो ये था कि एक दूसरे से लोग जो है कि टच भी ना हो, छुए भी ना, तो दिक्कत भी था, लोग मना भी करते थे। पर हाँ, अगर देखा जाए तो 2 सालों में जो 2 साल का गैप रहा, निश्चित रूप से उसका बहुत फर्क पड़ा बच्चों में। और फर्क ऐसा रहा कि जो पढ़ाया गया था, जो सिखाया गया था, वो जो है कि कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा मिस आउट हुआ। फिर भी कंप्यूटर वाले में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर वाले में फायदा ये हुआ, हाँ सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर सकते, पर ये है कि आजकल सबके हाथ में, सबके घरों में एंड्रॉइड फोन है, तो उस फोन का इस्तेमाल वो और अच्छे तरीके से करना सीख गए। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोगों ने कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बताया था, सिखाया था, वो जो है कि उनके घर में जो एंड्रॉइड फोन था उसके माध्यम से वो लोग वो नहीं भूले। पर बहुत सारी चीजें जो है कि जो उनके उसमें था, कोर्स में था, वो निश्चित रूप से उनको काफी दिक्कत हुआ। सब क्या प्लान है लेकिन लोगों के लाइक वो गैप कवर करने के लिए, या कुछ लाइक सरकारी स्कूल्स में क्या हो रहा है टीचर्स और आप संगमम की तरफ? अभी तो ऐसा हो रहा है कि जैसे होता ये था कि जो है कि गर्मी की छुट्टी करीब 2 महीने के आसपास हो जाता था, 1.5 महीने से ज्यादा होता था, पर इस बार मुश्किल से 1 महीने का इन्होंने छुट्टी किया, तो वो 15 दिन का इन्होंने कि हम एक्स्ट्रा जो है कि वो करेंगे, क्लासेस लेंगे।
उसके अलावा जो ठंडी का जो छुट्टी होता था वो भी लंबा होता था, तो उसको भी इन्होंने कम किया हुआ है। तो इस तरीके से वो गैप भरने की कोशिश कर रहे हैं। पर दिक्कत कहाँ आया, दिक्कत सबसे बड़ा ये है कि इनको जब आप नेक्स्ट क्लास में कर दोगे, क्योंकि एक बच्चे को एक क्लास में रोक नहीं सकते आप, ऐसा पूरा जो है कि गाइडलाइन है इनका, तो वो दूसरे क्लास में उनको डाल ही देते हैं। तो जो उस जिस क्लास में थे, जैसे ये बच्चे जो अभी आए हैं 5वीं में आए हैं, तो ये बच्चे तीसरी और चौथी में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए इनको मौका मिला। अब ये सीधे 5वीं में आ गए, तो अब वो जो तीसरी और चौथी का जो सिलेबस छूटा है, जो चीजें इनको पढ़ाया जा सकता था उन क्लासेस में पढ़ते हैं ये, वो सब तो मिस आउट हो गया है। अब उसको किसी भी तरीके से वो मतलब फिर से तीन वाला सब्जेक्ट इनको नहीं पढ़ाया जा सकता। पर हाँ ये है कि कैसे उसको जो है कि और एक किया जा सके, तो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया है कि उसको टाइम लाइन में थोड़ा बांध दे, थोड़ा ज्यादा टाइम दे बच्चों को, ताकि कुछ और चीजें सिखाया जा सके, ऐसा है। अगर इन लोगों को लाइक बच्चों को थर्ड सब गैप्स है, तो फिफ्थ का कैसे अब लाइक अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एकदम खत्म ही हो गया, तीसरी और चौथी एकदम खत्म ही हो गया इनका, और एकदम टोटली घर पे रहे। वैसे ही प्राथमिक विद्यालयों की हालत बहुत खराब स्थिति में है, अभी थोड़ा सुधर रहा है, थोड़ा जो है कि ये हो रहा है। आज एक नई चीज, इस विद्यालय में हम लोग बैठे थे, हम लोग के साथ अरविंद मूर्ति जी भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, तो हम लोग बैठे हुए थे और आजकल मुझे ये लगा कि हेडमास्टर साहब ने ये कहा, एक बच्चा एडमिशन कराने के लिए आया अपना, उनके फैमिली वो भी आए थे, पेरेंट्स भी आए थे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जगह फुल हो गया है, मतलब जगह नहीं है कि हम जो है कि आपका एडमिशन करें। तो अच्छा ये देख के समझ के लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें है, क्योंकि जितनी तेजी से बच्चों की संख्या प्राथमिक विद्यालयों में घट रही है, उतनी ही तेजी से सरकार प्राथमिक विद्यालय को बंद करने के तैयारी में है, या बंद भी कर रही है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे यहाँ ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ की जगह नहीं है कि बच्चों का एडमिशन ले सके। तो एक तरफ ये भी है कि जो है कि बंद भी हो रहे हैं, पर दूसरी तरफ बच्चों के लिए जगह नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि बहुत अच्छे भी विद्यालय हैं जहाँ अच्छे टीचर हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल तो हमेशा बना हुआ है कि क्या सरकारी विद्यालयों में वो शिक्षा मिल पा रही है लोगों को, जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, या वो स्तर है कि नहीं है। तो ये सब डिबेट में जो है कि हम लोग बात कर सकते हैं, पर जो है कि मुझे जो लग रहा है कि कंप्यूटर का जो हम लोगों ने यहाँ शुरू किया था, जिस उद्देश्य से शुरू किया था, हम लोगों का 2-3 उद्देश्य था कि बच्चों में इसको कंप्यूटर के प्रति इंटरेस्ट पैदा किया जाए। गणित और अंग्रेजी से हमेशा यूपी के बच्चे भागते रहे हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उस लड़की ने कहा कि माय नेम इज साक्षी, तो अच्छा लगा कि अब हम लोग जब 6वीं में गए थे, मैं अपनी बात बताऊं तो इसी विद्यालय में मैं पढ़ा हुआ हूँ, प्राथमिक विद्यालय में, और जब हम 6वीं में गए थे तो सुरेश लिखना सीखे थे, और जब सुरेश पहली बार लिखे थे तो मैं बहुत खुश था कि मैंने सुरेश लिख दिया अंग्रेजी में। तो वो भी समय था, और आज का समय है कि वो बच्ची यहाँ बोल भी रही है, तो वो बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। देखिए जरूर जरूर। So English से भी thank you सुरेश। थैंक नहीं, मैं यही बोल रहा था कि इंग्लिश के से भी फैमिलियरिटी बढ़ी है क्या थ्रू दिस कंप्यूटर, कि इंग्लिश का इन केवल जनरल केवल इस कंप्यूटर से तो नहीं कर सकते कि हाँ इसी कंप्यूटर से बढ़ा है, लेकिन निश्चित रूप से जब बच्चे रोज गेम देख रहे हैं, और उसी पे बोल रहा हूँ मैं, कंप्यूटर से जो है कि वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उससे बहुत बढ़ा है। मैंने मैथ के बारे में हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग जब मैथ का क्लास आता था, स्कूल क्लास छोड़ के भाग जाते थे कि मैथवा जैसे खत्म होगा तो आके फिर से पढ़ेंगे, और ये बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के मैथ का अगर सवाल हल कर रहे हैं, मैथ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा मैंने एक पहल है, एक अच्छा जो है कि हम लोग शुरू किए हैं। सुरेश जी अभी 10 यहाँ के हिसाब से 10:35 हो रहा है, तो अभी आई थिंक हमारा टाइम हो गया है अगले उसमें जाने का, अपर प्राइमरी में। As we switch, हमको हाँ जी, as we switch, would like to get some information from Rajaram and whoever else is there from Chennai area. Any on that question of the gap, educational gap for
almost nearly 2 years. What has been your experience out of Tamil Nadu area? So indeed, like a huge gap in the education, and anecdotally we have been hearing a lot of things about how children are receded in terms of, so their learning has been severely affected. More than an anecdotal thing, so Asha conducts assessment every year. We have been conducting one from about 2015 onwards, April 2015. So every year we conduct a written assessment in April and an oral assessment in October, November timeframe. So this year too, we conducted a oral assessment. Also, we conducted it in April actually. We couldn't conduct it in October, November because the schools had barely opened at that time. We conducted both the oral and written assessments in April timeframe. So looking at the results for children in classes 2, 3, 4, and 5, there is a huge gap in performance between the children who used to from 1920 to 22, 23 now, or 21, 22 now. That is April 19, 20. We did the last oral assessment in November of 2019. Now we are doing it in April of 2022. There is a huge gap in the learning. So children have really are doing much worse. We conducted the assessment for the first time in UP as well. I'll send Saurabh and others more concrete data from the assessment. We finished the assessment just before the summer holidays. We have done all the processing and we are in the stage of generating the reports and things like that. I'll share my findings with you all shortly. But yeah, indeed, there is a huge gap. And the other thing that I heard from our teachers here, I believe that will apply even in UP. The gap in written communication is worse because, especially the oral communication, especially if you are looking at in Tamil or Hindi, those wouldn't have suffered in any way. Even things like maths, so they will be going to shop doing some maths. So the oral learning has it has also been affected, but the written performance has become much worse. Even I noticed that when I attended some of these assessments here in Tamil Nadu. So earlier in class 2, when you give written assessment, you have to walk them through question by question. They won't be, you can't just give them a paper and expect them to answer the whole paper. Now even class 4 and 5, you are having to do that. So that's how bad, they don't know what to do with the question paper. They have not used to, they have not got back to writing 1 hour or 2 hour long test papers and things like that. So when we gave our written paper, it was a problem for the children. So anyway, there has been a lot of interesting findings. So a lot of whatever we were afraid of anecdotally are confirmed with the statistics as well. So what's the remedial plan, right? I know it's going to take more than 2 years to recover, but third standard child going into fifth, and it's not, there's already a gap and you're trying to sort of read on new material, right? So, and I was always like, each class has a certain milestone. The expectation is not grades or marks, and I think it's just that the spirit of inquiry and have the child be curious and learn or read whatever book the child wants to read, right? So getting there or wanting to write about something. So how do we address this, right? I know it's a long-term problem, it's going to be a long-term thing for a few years, and it's going to affect a lot of schools, right? Private, public, government, anything, right? So I have a certain thought on it, but unfortunately, I don't think that's going to fly anywhere. I'm being very frank about it. So see, one of the things is even before Corona, the reality was that most of the children are not at the class level, right? So if you have a certain idea of where the children should be at this class, most of the children were not at that level even before Corona. So Asar has been finding that, a lot of other studies have been finding that. So this idea of there being a certain class level and you are teaching to that, the curriculum is designed for that, the textbook is designed for that.
very often mindlessly the teacher teaches the textbook, what is there in the textbook, without paying any attention to where the children are. So this problem was there even before Corona. Now, in a way, Corona has amplified that problem. Now the children are way behind the textbook. It makes it even more ridiculous for you to stick to the textbooks and teach at this supposed correct level for that class. The children are nowhere near that level. Even earlier, they were nowhere near that level, as Asar has been finding out. So I think if a good teacher understands where the children are and teaches to the level of the children rather than whatever the textbook is asking to teach you, that will work under all circumstances, including the present one. The teacher needs to be cognizant of where the children are and teach to the level of the children. And it's not as bad a problem as you might think. The thing is, see, basically, if you look at something like maths, in Tamil Nadu, you have 3 terms. In each of those 3 terms, there are 4 lessons. The 4 lessons are exactly same in term 1, term 2, and term 3. First lesson is on shapes. Second lesson is on numbers. Third lesson is on data modeling or something like that, patterns and sequences and data modeling and things like that. So the same thing repeats. Like, so what you teach in numbers for class 1 would be just basic counting and basic numeracy. Then you will go on to teaching addition, subtraction, 1 digit, 2 digit. Then you will move on to with carry, with borrowing. Then you will move on to multiplication, so on. So the same thing loops. So when you are teaching numbers in a certain term for a certain class, you need to know where the children are. If they don't even know place value, if they don't even know, can't even recognize single digit number, that's what you ought to be teaching. It doesn't matter what the textbook says you should be teaching, but you should be teaching what the children need to learn. So if teachers are given the freedom to do that and they can do that, that is the solution broadly for uplifting India's education, whether or not Corona occurred, right? So that will work now as at any other time, but I don't think that's going to fly, which is a sad part of it. Yeah, Thank you, Rajaram. It's a mega challenge, and yeah, generations are going to be affected by it. It's an important aspect to kind of be aware of what is going to happen. These 2 years is going to be very hard to catch up for practically every grade level. Another thing, like, see, some of the kind of things that we keep talking about, I was able to validate it during this Corona, is like, see, learning that occurs through practical experience, children don't lose that. So I had an opportunity to meet children in 9th standard who, after 2 years of Corona break, whatever we taught in our open office presentation and whatever, since they sat at a computer, did a project work for 3 months and things like that, they have not forgotten that. So they would have forgotten all their what they learned in maths and English and whatever. So the things that they practically learn through when you and that registers in your mind. That's the whole idea in doing project work and doing activity-based learning and whatever. These things should be used a lot more effectively, and this kind of validated some of those things as well. Yeah, thank you. Thank you. We'll go back to Suresh ji. जी, तो अभी हम लोग जो है कि अपर प्राइमरी स्कूल में हैं। ये अपर प्राइमरी स्कूल मेहदीगंज है और कितने पास हैं क्या दोनों? 6 से कक्षा 8 तक की। हाँ, एकदम पास है। मैंने बताया था ना कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 मिनट का समय लगता है। यहाँ अपना जो है कि ये लगा हुआ है बोर्ड कंप्यूटर लैब का, और ये जो है कि कंप्यूटर लैब है। ये बच्चियां जो है, कौन से क्लास के हैं बच्चे आप लोग? 7th। क्या नाम है आपका? क्या? मेरा नाम प्रिया पटेल। क्या कर रही हैं प्रिया? मैथ का सवाल लगा रही हैं। अच्छा, तो ये क्लासरूम है कक्षा 7 का जी। यहाँ भी कितने बच्चे हैं अभी? यहाँ हम लोगों ने कुल 4 कंप्यूटर दिए हैं। अभी जो है कि 2-2 करके 8 बच्चे कुल बैठे हुए हैं लैब में।
तो यहाँ भी सेम मॉडल होता है कि वो हर एक क्लास का 35 मिनट का होता है रोज दिन का समय? जी। अच्छा, मैं म्यूट हूँ ना। हम लोग हर एक दिन यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि 3-3 दिन का चलता है। 3 दिन अच्छा। प्राइमरी स्कूल में रहते हैं टीचर, और 3 दिन जो है कि ये अपर प्राइमरी में आते हैं। तो जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन कंप्यूटर में कुछ होता है कि नहीं होता उस दिन? कंप्यूटर बच्चों के लिए खुला होता है। बच्चे अपना जो है कि आके लैब में जो उन्होंने पीछे पढ़ा होता है, हाँ। जो टीचर हमारे बता के गए होते हैं, उसको जो है कि उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो बच्चे आते अपने उसी सिस्टम से हैं कि आधे घंटे का, जिसका जैसे 7th क्लास का जब आधे घंटे का समय होगा उस समय वो आएंगे? जी जी, वो अपने जो है कि आते हैं बच्चे, और अपने से जो है कि प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें, जैसे ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये गणित की, तो इसमें ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन मिलता है या हिंदी में इंस्ट्रक्शन है? बच्चे कैसे मतलब कर पाते हैं? एक्चुअली भैया इसमें जो ये पीएचडी में मैथ कर रहे हैं एक्सरसाइज, और इसमें हिंदी में ट्रांसलेटेड है ऑलरेडी। हम लोगों ने उसको ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में। तो अभी यहाँ पे हिंदी, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में आपको दिख जाएगा। तो क्योंकि यूपी बोर्ड में हम लोगों को कराना था, तो हम लोग ट्रांसलेट कर लिया था हिंदी। अच्छा, आप लोगों ने किया है। तो ये अभी हाँ, ये फ्रैक्शन कर रहे हैं ये मैथ में। ठीक है। तो मैथ के अलावा 7वीं कक्षा के लिए और क्या क्या रहता है? मतलब इसमें आशा कनिनी इंग्लिश भी? इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है। और जो सवाल आपने पूछा था कि बच्चे कैसे पता चलता है कि कौन सा इनका खुला हुआ है, कैसे खोलेंगे। देखिए बच्ची खोल रही है जो है कि कैसे, ये आ गया क्लास में इन्होंने जो है कि 7 को उन्होंने वो चूज किया है। और इसमें हिंदी नहीं बेटा, इंग्लिश खोल लो ना, इंग्लिश। हाँ तो सर वो मीडियम है, किस मीडियम का उन लोगों को चाहिए? हिंदी मीडियम में चाहिए या अंग्रेजी मीडियम में चाहिए? तो सिलेक्शन। अच्छा, हिंदी मीडियम में। हाँ हाँ, हमको नहीं पता है, हिंदी मीडियम कर लीजिए। अच्छा अच्छा, सब्जेक्ट में इंग्लिश कर लीजिए। ये इन्होंने इसको क्या हो गया सर, अगर कोई चीज हिंदी मीडियम में नहीं होता है किसी पैकेज में, तो एरर बता देता है, तो बच्चों को समझ में आता है कि इसमें हिंदी अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग ट्राई करेंगे किसी और मीडियम में। अच्छा, तो कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है इसमें? मैथ और आपने इंग्लिश बताया। हम लोगों ने मैपिंग किया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान स्पेशली। अच्छा। और कुछ पैकेज ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में है, जैसे इजी टीचिंग करके पैकेज है, तो वो सिर्फ अंग्रेजी के लिए है। तो अगर उसको हम हिंदी मीडियम में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन जैसे पीएचडी है, तो पीएचडी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। तो अगर वो पीएचडी को हिंदी में सर्च करेंगे तो हिंदी वाले फॉर्मेट एक साथ मिलेंगे, और अगर अंग्रेजी में सर्च करेंगे तो अंग्रेजी वाले फॉर्मेट एक साथ मिलेंगे। और अगर आल करके खोजेंगे तो दोनों मीडियम के साथ में मिलेंगे। ठीक है। अली जी दिखा रहे हो विज्ञान का है क्या हो? अच्छा, विज्ञान साइंस का है। अच्छा भैया आप अगर बच्चों से इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो फिर हम बात कर सकते हैं। पीएचडी जो है सर स्पेशल विज्ञान और गणित के लिए बना हुआ है। तो बच्चों को जो विज्ञान में जो थ्योरी लिखा होता है, लिखित रूप में होता है, तो अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं तो उन लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है कि थ्योरी से बढ़िया हम लोग सामने सिमुलेशन देख रहे हैं, तो उन लोग को अच्छे समझ में आता है कौन चीज कैसे काम करता है। तो अली जी, जैसे जिस दिन आप लोग जाते हैं स्कूल में, तो उस दिन क्या मतलब आप बताते हैं इनको कि आज सब लोग ये वाला लेसन से जो रिलेटेड मटेरियल है उसको देखो, कि मतलब कैसे, जैसे ये अब जो भी आज ये जो भी लेसन है, ये कि आज ये लेसन सब लोग एक साथ करेंगे, इस तरह से करते हैं कि सब लोग अपने आप से आके चूज करते हैं इनको कौन सा लेसन करना है? नहीं सर,
हाँ रोहित रोहित आप बोलिए। हाँ, जब सर हम यहाँ पे टीचिंग काम कर रहे थे तो बच्चों से पूछते थे कि विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन सा लेसन चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो पहले हम उसको अपने लैपटॉप पे हम सर्च कर लेते थे अगर वो मटेरियल है कि नहीं है। तो फिर बच्चों को हम इंसिस्ट करते थे, बोलते थे कि ऐसे से जैसे सर्च करो, देखो है मिलेगा, हमारे में मिला तुम लोगों को मिलेगा। तो वो मिलता था उन लोगों को। तो मिलने के बाद बस उन लोगों को समझा देते थे कि देखो ये चीज ऐसे करोगे तो काम करेगा। एक बार बताने के बाद हम उनसे कहते कि अब तुम लोग हमें करके दिखाओ, तो वो लोग करके दिखाते थे। ठीक, तो आप पता कर लेते हैं कि इनके क्लास में इनकी टीचर इनको क्या पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उनको बताते हैं। हाँ, बच्चों से पहले एक बार पूछ लेते हैं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है विज्ञान में। विज्ञान हो गया, फिर या फिर अगर इंग्लिश पढ़ाना तो इंग्लिश का भी पूछ लेते हैं। तो जैसे और अभी मैथ का भी। पिछले पहले बात कर रहे थे कि 2 साल हुए हैं कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है बच्चों की, तो ऐसा कुछ आप टॉपिक्स पिक करते हैं लास्ट 2 साल में, जो ताकि इनका अगर कोई गैप है कुछ किसी टॉपिक में इनको समझ नहीं आया है या पता नहीं है, तो ऐसा कोई पिछले 2 साल का कोई टॉपिक पिक करते हैं ताकि ये मतलब वो गैप पूरा हो, ऐसा आपका हाँ, कोई बच्चों से एक बार ऐसा है भैया कि रोहित, हाँ सर बोलिए आप ही। ये कनिनी ऐप से तो जो काम हम लोगों ने शुरू किया है वो तो अभी शुरू किया है, क्योंकि ये तो कोविड के दौरान ही हम लोगों ने उसको वो किया, मैप किया है। तो हाँ। पहले ये हम लोग, हाँ ये जो जी कॉम्प्रेस था, जी कॉम्प्रेस पे जरूर बच्चे जो है कि काम करते थे। हाँ रोहित बोलो आप। और सर यहाँ पे अपर में स्कूल मतलब कि जो लैब है वो कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही खुला था। तो यहाँ पर अब प्राइमरी की अपेक्षा थोड़ा कम टाइम मिला है बच्चों को क्लास लेने का। और कंडीशन कुछ ऐसे बने थे कि जब इन लोगों का टर्न होता था तो अक्सर स्कूल कुछ ना कुछ दिन बंद ही रहते थे हफ्ते में। 3 दिन में 2 दिन बंद होता था, कभी कभी 1 दिन बंद होता था। तो बच्चों से हम पूछ लेते थे कि पिछले बार जो कराए थे वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो हमको अपने से करके दिखाओ, और नहीं समझ में आया तो पूछो उसमें क्या दिक्कत है। तो जिसको आता था अच्छे से वो करके दिखाते थे, जिसको नहीं आता था पूछते थे तो हम उनको बताते थे, रिपीट कराते थे उस दिन। हाँ, मेरा सवाल एक्चुअली ऐसा था कि जैसे अभी ये 7वीं कक्षा में है, इन्होंने 5वीं और 6ठी कितना सीखा है कितना पढ़ा है पता नहीं, तो जो अगर कुछ गैप है, जैसे अभी वापस स्कूल में आ गए हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इनके गैप है, समझ नहीं है, जो कि 5वीं और 6ठी में पढ़ाए जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप इनके साथ कर रहे हैं डिस्कस कि अच्छा बच्चा मतलब बताओ कि 5वीं और 6ठी में कुछ ऐसा है, या टीचर से बात करके कि किसी बच्चे में कोई गैप है, किसी टॉपिक पे इसको कोई समझ नहीं है, तो उसमें ऐसे इस कनिनी के थ्रू, लाइक जो ये इस प्रैक्टिकल माध्यम के थ्रू कुछ इनको गैप को थोड़ा कम किया जा सकता है। हाँ सर, जैसे ये कि सवाल कभी-कभी हम मेरा बच्चों से पूछ भी लेते थे कि पिछले क्लास का हो गया या फिर जो पिछले साल का स्कूल तुम लोग नहीं चला, उसमें क्या ऐसा था जो तुम लोगों ने समझ में आया? तो कोशिश ये भी रहता था कंप्यूटर भी कराएँ, लेकिन जैसे कंप्यूटर बाय चांस उस दिन बिजली लाइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्लास में हम उन लोगों का थ्योरी क्लास ले लेते थे। बच्चों को बाकायदे उन लोगों को समझाते थे कि देखो ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है। और किताब में जैसे कोई चैप्टर है जो उन लोगों को समझ में नहीं आया था पिछली बार का, तो उनसे हम लोग फीडबैक ले लेते थे कि क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया। उस हिसाब से उन लोगों को फिर इंसिस्ट करते थे कि देखो ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। या फिर ये थ्योरी है तो इसका मतलब ये है, ये बताना चाह रही है, और इसका सिमुलेशन ये था। उसका हम अपने लैपटॉप में दिखा देते थे कि देखो जो तुम लोग ये किताब में पढ़ रहे हो उसका एक्चुअल चीज़ ऐसे होता है, जो ये तुम लोग लैपटॉप में देख रहे हो। तो उस तरीके का भी हम लोग क्लास लेते थे। हाँ, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो मतलब एजुकेशन गैप तो है, बट अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि इसके माध्यम से आप उनका जो भी कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछले किसी मॉड्यूल 6ठी कक्षा या 5वीं कक्षा के मॉड्यूल को पकड़ के वो उनको थोड़ा समझाएं, ताकि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो उनको आना चाहिए है, जिसके लिए 7वीं कक्षा में चाहिए, वो समझें पहले, और वो किसी तरह गैप पूरा हुए। जी। तो आई थिंक वो जो सवाल का मतलब पहले जो सवाल कर रहे थे उसी का मतलब वही है कि हम संगमम प्रोजेक्ट में ये इसी तरह से कवर कर सकते हैं, मतलब बाकी जो टीचर कर रहे हैं क्लासरूम में उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं,
जी। और कि बात वो ये क्या भी है सर डिसाइड ना कि जैसे करते हैं। कि सभी सिस्टम में 1 से लेके 8 तक के सारे पैकेज पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपर में सिर्फ 6 से 8 तक का ही चलेगा, उसमें भी 1 से 5 तक के अवेलेबल है। तो अगर बच्चे चाहें, अगर उन लोगों से हम पूछ भी लेते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग 5 का, 3 का, 4 का भी जो टॉपिक लोग नहीं समझा वो भी हम उन लोगों को दिखा सकते हैं, उन लोगों को समझा सकते हैं। तो कभी ये ऐसा नहीं है कि अपर में सिर्फ अपर का चलेगा या प्राइमरी में सिर्फ प्राइमरी चलेगा। प्राइमरी में भी 1 से लेके 8 तक के डेटा अवेलेबल है, अपर में भी 1 से लेके 8 तक के डेटा अवेलेबल है। ओके, ठीक, बढ़िया। Good. Saurabh, you want to move to the next topic if there is one? I think we just had like some time for interaction in general, so questions. Yeah. So we can use 1 or 2 questions that we have, or anyone has. Yeah, Girish, Ankita, any questions? Nothing from me, but I'll connect back and you know, I'll let you guys know. Okay, thanks. तो सुरेश जी, वो कंप्यूटर सेंटर आपका ऑफिस दूर है क्या, लाइक, और सिर्फ आसपास में है? नहीं, वो एक तो कंप्यूटर सेंटर हमारे यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है, और दूसरा ये है कि अभी वो बंद हो गया है, क्योंकि वो सुबह जो है कि 8:30 से 9:30 अभी चल रहा था, जिसको हम लोग सुबह 7:30 से 8:30 करेंगे। 2-3 चीजें मुझे अपनी तरफ से भी बोलना था आप लोगों से। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप एक बार पूछ लें, और फिर हम लोग एक दूसरे से बात कर लें, और उसके बाद मैं अपनी तरफ से 2-3 चीजें मुझे ऐड करना था, जो मैं करूंगा। I have no other questions. Yes, same for me, not for now. Ranga? Yeah, I'm good. I'm good with the school. Yeah. Who else is there? Okay. एक मेरे को बस इसका I mean, जैसे आपका कंप्यूटर लैब है, दोनों देखे तो I mean very impressed, बहुत अच्छा लगा देख के कि बच्चे सीख रहे हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपने आप कर पा रहे हैं ये 7वीं कक्षा के, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ये सब अरेंज करने के लिए। So just one point add, I don't know if it got mentioned in Hindi and I didn't notice, but yeah, these labs have been set up using donation of used computers from Ford. So we received 100 computers from Ford back in January, Feb of 2020. And out of that, some 30 of them were sent to UP as well. So all the schools have been set up with good computer labs, thanks to the donations from Ford. So this year we have received some more donations from Ford, like computer donations. So anyway, we might be sending some computers to UP further as well as needed. That's great. So these are Indian-made laptops? I mean, these are desktop computers, is it? These are mostly desktops. So whatever we received in 2020 were all desktops. Whatever we received this year is all laptops. But yeah, what we sent to UP were desktop computers. So the laptop computers that you saw over there are the teachers' laptops. So each of the teacher has been given a laptop as well. And how many did you get this year? So this year, once again, we have got 100 computers from Ford, but those are very nice. We try and get as many as we can. But this year, so once again, we were able to get 100 laptops this time from Ford. Very nice. So you Asha Chennai applied for this grant through Ford. How did that work? Correct. Just quickly. Yeah, we got it direct. We got it as Asha Chennai. Correct. Okay. I'll speak to you offline about it. Another thing. So here, like this is set up in Mendiganj, right? I think we are covering a few other schools as well. So have labs been set up in those schools as well, in the other areas? In Tamil Nadu, yes. So we are supporting a total of 100 schools here in Tamil Nadu. We are in the process of expanding that to 150 as well. So yeah, in
all those schools, we have, to the extent possible, we have been setting up these small labs as well. So the average size of the school here in Tamil Nadu, at least the ones we are supporting, not at broadly in Tamil Nadu or UP, but the size of the schools that we are supporting here in Tamil Nadu is a lot smaller than that in UP. So only in a few schools we have set up these kind of labs. It's mostly just one computer donated to a school, so which is used by our teacher when she visits the schools in addition to the her own laptop. Okay. And what about the schools that we are covering in UP? Like, do all schools have this sort of lab? So currently, yes, all the schools have a lab. So I think one of them, there wasn't space available. I think that has also been taken care of. Suresh, yeah. might be Mohit, you missed some of that while you were away. Yeah. So 6 out of 7 schools have an established lab, computer lab. Good. Gotcha. Okay. Good. Cool. I don't have any other questions then. Thank you. Oh, but, great to see this live virtually. Yeah. But yeah, fantastic. Yeah. Thank you so all for. I don't know if it was intentional or not, but yeah, I think the walkthrough demos have also mostly been covering Asha Kanini rather than the computer science curriculum. Even in my talk, I talked mostly about Asha Kanini and not the computer science curriculum. But yeah, their work spans that as well. Just be aware. So next time around, when we get a chance to do that, we can probably focus more on the computer science curriculum. Yeah, sure. Sure. Thanks. सुरेश जी, आपने कुछ बताना था, बताइए. तो 2-3 चीजें था जो मुझे बोलना था. एक तो आप देख रहे हैं कि दोनों विद्यालयों को आपने देखा, तो इसी तरीके से दूसरे विद्यालय भी चल रहे हैं. तो अधिकतर लड़कियों की संख्या है विद्यालय में. तो एक तो ये चाहेंगे कि जब हम लोग अगले साल, मतलब जब अगला हम लोग प्रपोजल बना रहे हो, बजट बना रहे हो, तो थोड़ी मदद हम लोग अगर किशोरियों को खास तौर से जो है कि हम लोग सैनिटरी पैड वगैरह दे पाए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत यूजफुल होता है इनके लिए. क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो लड़कियां आती हैं, ये सब मोस्टली जो है कि एकदम गरीब परिवारों से आती हैं. और यहाँ जिस तरीके का शिक्षा का पूरा बाजारीकरण हो रहा है, उसमें ये है कि जिनके पास पैसा हो रहा है तो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं. तो एक तो पैसे की कमी के कारण कई बार जो है कि इनको जो है कि सैनिटरी पैड भी खरीदना इनके लिए बहुत कठिन हो जाता है. तो एक तो ये था कि अगर हम लोग ये कर पाए. दूसरा ये था कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुल मिला के केवल 4 टीचर ही हैं. तो अधिकतर समय हमारे टीचरों का चला जाता है जो है अपने विद्यालय में. तो हमारा जो ये किशोरियों वाला जो कंप्यूटर सेंटर है, उसमें कई बार दिक्कत खड़ा हो जाता है टाइमिंग का. जैसे है कि 7:30 से 10:30 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं. तो अब ऐसी परिस्थिति में हम कितने बजे से अपना कंप्यूटर क्लास चलाएं, वो एक हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है. तो हम ये कि अगर हम लोग एक कम से कम एक्स्ट्रा टीचर ये करें. दूसरा ये था कि जहां हम लोग अभी चला रहे हैं, हमारे जो ऑफिस पे चला रहे हैं उस कंप्यूटर सेंटर को, आप जानते हैं कि वहाँ सिलाई कढ़ाई और चीजों का भी हम लोग कर रहे हैं. और वो पूरा जो है कि MMU मनरेगा मजदूर यूनियन के जो है पूरे उससे आता है. तो हम लोगों को जगह की कमी पड़ रही है और हम लोग उसको जो है कि ठीक तरीके से कई बार नहीं चला पाते हैं, क्योंकि फिर दूसरे कार्यक्रम अगर होते हैं तो हमको वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोग जो है कि उसमें आ जाते हैं. तो अगर हम लोगों को कंप्यूटर किशोरियों का कंप्यूटर वाला ठीक से अगर हम लोगों को चलाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा सेपरेट जगह और एक टीचर हम लोगों को देखना पड़ेगा. जी. या प्रपोजल भेजिए सौरभ के साथ कोऑर्डिनेट करके, हम देखिए, हम देख सकते हैं. और आई थिंक हमारा एक और प्रोजेक्ट है संकल्प एक प्रयास. वो लोग आई थिंक इस तरह से खुद ही आई थिंक उन्होंने एक सेंटर बनाया है जो आशा के सपोर्ट से, जिसमें वो सैनिटरी पैड्स खुद ही बनाते हैं और मतलब काफी अफोर्डेबल रहता है. और आई थिंक थोड़ा. और मोहित, ये यहाँ पे भी है ना, नवज्योति प्रोजेक्ट में भी तो कर रहे हैं. Yes. But I don't know if they do sanitary pads. किशोरी केंद्र में नहीं, वो लोग परचेज करते हैं ना.
अच्छा, वो लोग परचेज करके वो हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह का कुछ आपने सोचा है, मतलब बनाने का कोई मशीन लेने बनाने का? के बारे में हमने भैया बात किया था कि हाँ, हम लोग खुद ही एक, क्योंकि हमारे साथ करीब 2000 के आसपास की किशोरियां जुड़ी हुई हैं, हाँ, और हाँ, और हम लोग भी सिलाई केंद्र चलाते हैं अपना मनरेगा मजदूर यूनियन के थ्रू। तो करीब जो है कि 200 किशोरियां रोज आती हैं हम लोगों के सेंटर पे। तो उसमें हो ये रहा है दिक्कत कि हमने जब बात किया एक दो लोगों से, तो उन्होंने कहा कि करीब 7 से 8 लाख रुपए लगेगा उसका मशीन आने में। अच्छा, हाँ, सैनिटरी पैड बनाने का। अब आप जानते हैं कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च करना है तो बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए जी। तो इसलिए फिर हम उसको ये मतलब ये कर थे, लेकिन वो व्यवसायिक दृष्टि से भी अगर मतलब किसी तरीके से अगर वो हम लोग अगर उसको बनाने जैसा कुछ खोल लेते तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती कि फिर हम लोग चाहें तो उसको व्यवसायिक दृष्टि से भी उसको कर सकते थे। एक दो टीचर का तो पैसा वैसे ही निकल के आ जाता। 2000 किशोरियां जुड़ी हुई हम लोगों से, और सबको खरीदना ही है। उसका जो कास्ट आता है वो 4 से 500 रुपए आता है, 4 से 5 रुपए उसको 4 से बनाने 5 का। रुपए और अगर हम अच्छा, कॉस्ट, ओके। तो एक काम पर करते हैं, हेड। ये आप एक प्रपोजल भेजिए सौरभ के साथ मिलके। एक दूसरी सलाह है कि जैसे मोहित जिक्र कर रहे थे वो गरिमा प्रोजेक्ट, उन लोगों ने भी एक ऐसा सिस्टम लगाया है, इक्विपमेंट मशीन वगैरह लगाई हैं। मे बी आप दोनों को मिलवा सकते हैं और थोड़ा बात करके पता कर सकते हैं आप कि उनका सिस्टम कैसा है और कैसे काम चल रहा है, जिससे आप भी कुछ सीख पाए, राइट, जानकारी कुछ आपको मिल जाए। जरूर, बहुत तो अगर एक बार हमको एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। संकल्प बता रहे थे ना, संकल्प एक प्रयास, तो निश्चित रूप से एक बार नहीं, वो एक बार ईमेल फोन नंबर एड्रेस से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता, हम आपकी जानकारी के साथ दूसरों के साथ मिला के बात करवा सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको संकल्प एक प्रयास बोल के वो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको वेबसाइट में तो मिल जाएगा, पर जानकारी के लिए तो आप किसी से बात करके ही आपको पता लगेगा ज्यादा भी, राइट? हाँ, तो वही मैं कह रहा था, उनसे बात करके वो आपकी कनेक्शन करवा देंगे, जिससे आपको थोड़ा बात करके थोड़ी ज्यादा जानकारी वगैरह करने के बाद देखते हैं हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं ये काम करने के लिए। तो आप प्रपोजल भेजिए सौरभ के साथ मिलके, और उसके हिसाब से हम फिर देख लेंगे। जरूर। और कुछ आप बताना चाहेंगे? जी नहीं, बस वही मैंने कहा कि जो हम लोगों का किशोरियों वाला जो कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, वो जगह वाला जो है उसके बारे में भी बताइए, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी, उसके बारे में यही है कि वो एक जगह है जो हम लोगों का मनरेगा मजदूर यूनियन का ऑफिस चलता है, उसी में क्योंकि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, डांसिंग, कुकिंग, ब्यूटिशियन का हम लोग कोर्स चलाते हैं 6 महीने का किशोरियों के लिए। तो वो लोग किशोरियां रोज आती हैं वहां पर। कई बार क्या होता है कि वहाँ ट्रेनिंग वगैरह जब हम उन लोगों का करते हैं, वो कई बार रात में भी रुकती हैं, या हम लोगों का खुद का मनरेगा मजदूर यूनियन का जब बैठक वगैरह होता है तो उस दिन वो क्लासेस जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं कंप्यूटर के। तो इसलिए वो हम लोग कंटिन्यूसली उसको चला नहीं पा रहे हैं। बीच में ऐसा भी हुआ कि वहाँ कंप्यूटर ही हमारे पास नहीं था, जब क्योंकि हरसोस विद्यालय का कंप्यूटर रखा हुआ था, तो अब तक हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। बीच में हुआ कि वहाँ हम लोगों ने जब कंप्यूटर लैब खुल गया तो उसके बाद कंप्यूटर नहीं था कि हम किशोरियों को पढ़ा सकें। दूसरी बात ये कि जैसे अभी विद्यालय खुल गया तो अब हमारे टीचर विद्यालय में जाएंगे, 7:30 से स्कूल ओपन हो रहा है और 10:30 तक चल रहा है। तो अब दिक्कत ये आ रही कि हमारे पास टीचर नहीं है कि हम उनको पढ़ा सके। तो हम इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करके अपने टीचरों से थोड़ी इनका एक्स्ट्रा टाइम लेके हम पढ़वा तो रहे हैं, पर अगर हम लोगों को उसको लंबे समय तक अगर उसको चलाना है, ठीक से अगर उसको चलाना हम लोग चाहें तो आपकी बात समझ आ गई है, आपकी बात। हाँ तो जी सर, वही जैसे कहा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और प्रपोजल जरा भेजिए, उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। जरूर 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 जी भैया जी। और सुरेश जी, वो लास्ट ईयर जो ये तो दो बातें
और आपने 2-3 बातों के बारे में बोला था, तो अभी तो ये 2 बातें। तीसरा मैंने टीचर का, मैंने टीचर, सैनिटरी पैड और वो ऑफिस का। हाँ ठीक है। और सुरेश जी, वो लास्ट ईयर वो जो हमने आशा राजातलाब से वो कंप्यूटर सेंटर का किया था ना, वो आपने ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर और एमएमयू का यूज कर रहे हैं क्या? जी, तो लास्ट ईयर आपने एक प्रपोजल दिया था ना, एक कंप्यूटर सेंटर सेटअप करने के लिए, ऑफिस और कंप्यूटर सेंटर। जी, लाइक अब वो एमएमयू का भी यूज हो रहा है क्या? नहीं, आशा वाले काम में, आशा का जो ऑफिस है उसमें एमएमयू का नहीं हो रहा है। एमएमयू के ऑफिस में आशा का काम हो रहा है, कंप्यूटर सेंटर का। सो लास्ट ईयर वो क्या, वो उस प्रपोजल में क्या था वो? लास्ट ईयर वो प्रपोजल हम लोगों ने डाला था कि हम एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, जिसके लिए 2 टीचर चाहिए होंगे, 8 कंप्यूटर था, फर्नीचर था, ऑफिस था, ऐसे ये पूरा था। Saurabh, you're still there? Can you Yeah, no, I'm still there. Yeah, can you recollect? I know we funded something of in the neighborhood of about 8 lakhs for tables and furniture and computers and stuff like that. Yeah, तो उसमें हाँ ना, I remember. सुरेश जी, उसमें से जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर तो वही था जो हरसोस में जाने के बाद जो आपने नया जो कंप्यूटर आपने लिए हैं, वही कंप्यूटर है जो आपने लिए उस पैसे से, राइट? जी हाँ, अभी लिया है। और ऑफिस अभी स्पेस 2 डेस्कटॉप, जो 2 डेस्कटॉप और 2 लैपटॉप हम लोगों ने अभी परचेज किया, जिसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर सेंटर के रूप में कर रहे हैं किशोरियों को पढ़ाने के लिए। और फर्नीचर भी आपने लिया है उससे कि फर्नीचर आपको लेना पड़ा फर्नीचर की नहीं फर्नीचर लेना? जो पीछे फर्नीचर हमको नहीं लेना पड़ा, क्योंकि फर्नीचर का जो पीछे वाला था फर्नीचर, वो हरसोस में हम लोगों ने जब इस्टेब्लिश किया तो हरसोस के विद्यालय ने ही फर्नीचर प्रोवाइड करा दिया है। कुछ प्रोवाइड करा दिया है, कुछ वो हमसे मांग रहे हैं। अब विद्यालय खुला है तो देख लेते हैं कि अगर उनको जरूरत होगी तो खरीदा जाएगा, नहीं तो हमारे पास पर्याप्त अभी फर्नीचर है। Yeah, so I just looked at the proposal. So that was for infrastructure in terms of tables and computers. So it was not a room. So Suresh, if I understand correctly, you want to build a separate space. जी। नहीं, वो पिछली बार डिस्कशन हुआ था। आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट वेंट टू द मेन डिस्कशन इन द मीटिंग, बट आई नो Rajaram ji, now we discussed there was an extra space that Suresh ji could get where he has his current office. I think upstairs there's an additional space, bigger space, but I think we decided not to go for that option when we discussed last year. It might be a different case this time. Things are better now, but yeah, for office we decided not to go, but we kept money for furniture and computer because we knew that Harsos might open and they will send all the computers there, so they need some computer for the lab that is there. Okay, yeah, I get it now. Yeah, so आप proposal भेज दीजिए, like yeah, and there's Austin and like Rajatalab का share भी है, so we'll take a look at it and दो proposals, we'll take care of that. So please coordinate with Saurabh, सुरेश जी and जरूर। जी धन्यवाद। हाँ, सुरेश जी, बात करते हैं किशोरी केंद्र वाला। आपको याद होगा कि ये एक आपने पायलट शुरू किया था, हम लोग उस पे ये नहीं हुआ उस समय, ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये इसको हम कैसे इसको सस्टेन करना है, या ये एक पायलट है। तो अगर आपको कुछ रिजल्ट्स उसमें ऐसे दिख गए हैं और कन्विंस्ड है कि ये इसको रखना है हमेशा के लिए, तो बात करते हैं उसके बारे में फिर। जरूर जी, बिल्कुल उससे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक we covered everything. I know it's 15 minutes over, but I think it's good we saw everything. Suresh ji, thank you to you and Rajaram ji. और फिर हम लोग बात करते हैं आगे जो प्रपोजल उस पे, आइडियाज पे। जी, बाकी सभी साथियों का, एब्रॉड के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग फिजिकल भी मिल पाएंगे। और अगर कोई साथी उधर से आ रहे हों
यूएस वगैरह से, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी इन्फॉर्म करिएगा ताकि वो आके फिजिकल थोड़ा सा देखें और हम लोगों को कुछ सजेशन मिलता है तो अच्छा रहता है, ताकि हम लोग और कैसे बेहतर कर पाए। हम लोगों की जितनी समझ है उस समझ के साथ हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए हुए हैं। लेकिन अगर आप में से कोई अगर आ रहा हो, अपना आशा का कोई साथी आ रहा हो, तो उससे निश्चित रूप से हम लोगों को और मदद मिलेगी चीजों को समझने में, जानने में, इस काम को और आगे बढ़ाने में। जी, सबका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। रोहित जी, अली जी, सबको, राजाराम जी, राजाराम जी, अरविंद। Yeah, thank you everyone. Glad that you could all see this virtually, but yeah, I think you should visit the place. Those are great places to see. Definitely. Sure thing. Bye everyone. Yeah, Thanks for taking the everyone. time. Appreciate it. Great Bye, virtual visit. Thank you. Bye. Bye. Bye, sir. Bye.